this is video number 2 for chapter inflation. Now I'm starting with running inflation, that is another type of inflation. Okay, running inflation is basically a situation in which inflation is rising at a faster rate as compared to both creeping and walking inflation. Okay, so under running inflation the prices increase at a still faster rate as compared to both the inflations. The price rise may be about 10 to 20% per annum, मतलब डबल डिजिट में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको लास्ट ईयर तक अज्यूम करो से 100 का मिलता होगा, वो ये ईयर अचानक से 120 का भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इन विच द प्राइसेस विल राइज इन डबल डिजिट. This kind of inflation is very bad about, you can say, the middle class or poor people, okay, because उनके पास उतना source of income नहीं होगा कि वो सारे goods and services afford कर पाए. Plus this kind of inflation is also not good for an economy, okay, because if there is a continuous rise in price, automatically demand for goods and services will fall. Okay, so this kind of inflation is not good for both economies as well as for the people of a country. Okay, so running inflation is, you can say, a government should take necessary steps to control it, otherwise it will convert into the hyperinflation, which is the last type of inflation. Next is hyperinflation. In hyperinflation, the rate of inflation will be from 20% to 100% or even more than 100%, that is 200% or 300%. मतलब सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो 2010 में 100 रुपीज का था, क्लियर, वो 2011 में आपको 200 का भी मिल सकता है या 300 या 400 का भी मिल सकता है. दिस इज नोन एज अ हाइपर इन्फ्लेशन, द फास्टेस्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन. Okay, so this is the last stage of inflation which starts after the level of full employment is reached. Full employment मतलब सबके पास जॉब अवेलेबल है, सबके पास इनकम का सोर्स है, सबको कुछ ना कुछ स्पेंड करना है तो लोग people will start demanding, and if people start demanding and goods and services are not in adequate amount या adequate quantity, then prices will automatically rise. Okay, so under hyperinflation the prices rise every moment and there is no upper limit to the price rise. Okay, 20% से तो start होता है, ठीक है, 20 से लेके 100 and plus multiple of hundreds में भी price can increase. Okay, the price rise may be about 20 to 100% per annum. This kind of hyperinflation is not good for both economy as well as citizen of country, because लोगों का purchasing power day by day will decrease. Okay, लोग जो पहले सेम क्वांटिटी या सेम कमोडिटी 100 रुपीज में ले रहे थे, दे विल नाउ हैव टू गिव 200 और 300 रुपीज, ठीक है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो लोगों का परचेसिंग पावर विल डिक्रीज. ओके, एट द सेम टाइम दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी एज वेल, बिकॉज ऐसी इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहां पे ऐसा अनस्टेबिलिटी और प्राइसेस कभी भी इतना ज्यादा फास्ट बढ़ जाता है. Okay, clear. So this kind of situation is harmful for both people as well as economy. Okay, so government need to take proper steps and measures to control this type of inflation. Okay, now we can see a graph. Okay, so this is a creeping inflation. Okay, जहाँ पे you can see number of years are on this axis. Okay, x-axis, and price is on y-axis. Okay, clear. So in creeping inflation, okay, you can see it takes 25 years टू डबल द प्राइस. ओके, मतलब अगर किसी चीज के प्राइस से 25 से 50 होने के लिए, या 0 to 25 एंड देन 50 होने के लिए 25 इयर्स लगे, ठीक है, क्लियर. बट फ्रॉम 25 इयर्स टू 35 इयर्स, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है, प्राइस 50 to 100 हो गया. ओके, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है, प्राइस कितने से बढ़ गया, ऑलमोस्ट 100% से. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, इन रनिंग इन्फ्लेशन विद इन अ स्पेन ऑफ 5 इयर्स, ओके, 35 to 40 इयर्स में, ठीक है, क्लियर, प्राइस 100 से 150 पहुंच गया, मतलब 50% इंक्रीज इन 5 इयर्स. ओके, क्लियर. एंड 150 to 200 जाने के लिए तो उसको सिर्फ शायद से खाली 1 साल या मैक्सिमम 2 इयर्स लगा. ओके, क्लियर. सो दिस इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन और ऑल्सो नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन का और एक टर्म ये भी है कि उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, मीन्स वेरी फास्ट ग्रोइंग inflation. Now there are two different causes for inflation. One is demand pull inflation and another is cost push inflation. मतलब दो चीज के वजह से inflation बढ़ता है. या तो जब भी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, देन द सप्लाई, तभी इन्फ्लेशन होता है, मतलब प्राइस राइज इन प्राइस होता है. ओके, क्लियर. या तो जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और उसके वजह से प्राइस इंक्रीज होता है, क्लियर,
तो उसको भी हम लोग इन्फ्लेशन का एक आप बोल सकते हो कॉज बोलते हैं. ओके, so the general price level rises because the demand for goods and services exceeds the supply available at current price. मतलब क्या कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है इन एन इकोनॉमी इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. तो जब भी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन द सप्लाई, द प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर से वीट के फॉर वीट 100 प्रोडक्ट्स या फॉर वीट या राइस के लिए 100 कंज्यूमर्स है जो डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर, फॉर सिर्फ 1 kg ऑल. ठीक है, so 100 kg का डिमांड है फॉर व्हीट एंड राइस. ओके, क्लियर, बट द सेलर हैज ओनली 50 kg. ओके, सो ये चीज तो एकदम नेचुरल हो गया कि सबकी डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती. ओके, क्लियर. सो लास्ट ऑप्शन एक यही है कि जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा उसको वो 50 kg मिल जाएगा. ओके, क्लियर. सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जहां पे डिमांड इज हाई एंड द सप्लाई इज लेस. ओके, क्लियर, at that particular point you can say it is a demand pull inflation. Demand pull inflation may be defined as a situation where aggregate demand means the total demand in the economy या the aggregate demand exceeds the economy's ability to supply. मतलब एक इकोनॉमी अपने फुल मैक्सिमम पे सप्लाई कर रहा है, क्लियर, फिर भी वो टोटल हर किसी की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, सम ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे. क्लियर. So it is a situation in which the aggregate demand exceeds the economy's ability to supply the goods and services at current prices, so that the prices are pulled upwards. Prices क्या होते हैं? Pull होते हैं, pull. ठीक है, pull upwards. Okay, by the upward shift of the demand function. Okay, so this was demand pull inflation. Next is causes of demand pull inflation. ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई मतलब क्या? इंक्रीज इन करेंसी अवेलेबल विद द पब्लिक एंड बैंक डिपॉजिट्स इन एन इकोनॉमी. करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स इसके लिए इंक्लूडेड है बिकॉज ये ऐसे मीडियम ऑफ आप बोल सकते हो सोर्स है या एक्सचेंज है जो ऑन डिमांड अवेलेबल होता है. मतलब आप बैंक में जाओ, कैश विड्रॉ करो, ठीक है, एंड यू कैन परचेज वॉट एवर यू वांट. ठीक है, एंड अगर आपके पास खुद के पास मनी है, करेंसी है, तो आप उससे जो भी परचेज करना है कर ही सकते हो. ठीक है, सो इफ देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ओके, ऑटोमेटिकली डिमांड विल इंक्रीज एंड इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइसेस विल आल्सो इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम मींस दैट पार्ट ऑफ इनकम, ओके, व्हिच यू आर रेडी टू स्पेंड on your needs and wants. Okay, so अगर आपका disposable income increase हो रहा है, clear, again you will demand more. Okay, and if you demand more and there is less in supply, okay, clear, again there will be rise in price. Okay, and the last point is increase in population. Okay, if there is a growth of population or increase in population in a country, obviously many people will start demanding many different things. Okay, और अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत सारे डिफरेंट चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट अगर सप्लाई का शॉर्टेज है, ओके, कोई भी बेसिक रिक्वायरमेंट का भी सप्लाई का शॉर्टेज है, ऑटोमेटिकली द प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ओके, इन दिस सिचुएशन अगेन देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in supply and there will be more of demand. Okay, so this will also again cause inflation. Now let us see a diagram of demand pull inflation. Okay, on y-axis in this diagram there is price. Okay, on x-axis the output produced. Okay, so as you can see, supply curve S is constant in the entire diagram. Okay, whereas demand curve is shifting towards upwards. Okay, clear. So demand curve is you can say a symbol of demand. Okay, clear. So demand is shifting from point D to D1. Okay, and then further to D2. Okay, as demand is increasing, simultaneously price is also increasing from P to P1 and P2. Okay, here you can see the demand is increasing, and because of demand is increasing, price is also increasing because the supply is constant. Supply is not moving. Okay, so this proves demand pull inflation, that because of increase in demand and when supply is constant, there will be increase in price, and this increase in price will be known as demand pull inflation. Next type of inflation is cost push inflation. Okay, it is also cause for inflation. Okay, clear. So cost push inflation, the price instead of being pulled up by excess demand may also be pushed
as a result of rise in the cost of production. So this means that a particular commodity, okay, जिसका डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है बट उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. अभी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के देयर आर डिफरेंट वेज. ओके, जैसे कि जो वर्कर काम कर रहा है उसके वेजेस या सैलरीज इंक्रीज हो गए. ओके, या जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो गए. क्लियर? या गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा चार्ज करने लग गए. ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बढ़ सकता है. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आल्सो. ओके, एंड दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन व्हिच इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Okay, so the basis of cost push theory is that organized groups, both business and labor, fix higher prices for their products or services. Business class भी अपने products को high price पे sell करना चाहता है. ठीक है, clear? और labor अपने wages या salaries का जो rate रहता है उसको high कर देते हैं, which will finally lead to the higher prices of goods and services. The true source of inflation is the increase in cost of production. Okay, तो जब भी cost of production increase हो जाएगा overall, ठीक है, so it will lead to increase in the price of goods and services, which is known as cost push inflation. Means increase in inflation or increase in price due to cost. Okay, which is known as cost push inflation. Next is causes for cost push inflation. सबसे पहले है वेज पुश ड्यू टू यूनियन और मोनोपोली पावर. ओके, कभी भी कोई भी ट्रेड फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनियन से, ट्रेड यूनियंस मतलब एम्प्लॉयज या वर्कर्स का कोई ग्रुप है, ठीक है, एंड इफ दे डिमांड फॉर हायर वेजेस, और अगर उनका जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, उनको हायर वेजेस दे देता है. ठीक है, क्लियर? सो दिस विल लीड टू राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्लियर? जो भी प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं उसके प्राइसेस विल rise. Okay, so this is known as or this is a type of, you can say, or a cause for cost push inflation. Okay, next is higher taxes. अगर गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते, ठीक है, तो हम लोग को अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल रखने के लिए ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे. ठीक है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट हम लोग जो बेच रहे हैं वो हम लोग को लॉस में सेल करना पड़ेगा. ओके, सो दिस विल अगेन लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ओके, एंड लास्ट इज इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके ही प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? सो अगेन दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ओके, सो 3 different ways in which the cost of a product can increase and thus will lead to cost push inflation. Wage push means wages of laborers increase हो जाना. ठीक है, क्लियर? Higher taxes means government is charging high taxes from us. Okay, तो उसके वजह से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाना. ठीक है, एंड इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. रॉ मटेरियल प्राइसेस मतलब बेसिक रॉ मटेरियल्स जो हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, उसके वजह से अगर उसका प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड फाइनली नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Now let us understand cost push inflation with the help of a diagram. Okay, so in this diagram on y-axis it is price and on x-axis the aggregate output. As you can see, the price is increasing from P1 to P2. Okay, the aggregate output is decreasing from Y1 to Y2. Okay, so this will also lead to decrease in supply from AS, that is aggregate supply AS1 to aggregate supply AS2. Okay, so if price further rises to P3, okay, the aggregate supply will more further shift towards left and upward and in upward direction. Okay, so will further reduce its output as well as its supply. Okay, so this indicates that there is, as the price increases, okay, clear, there is, you can say, a cost push inflation. Okay, so inflation is cost because of, you can say, increase in cost of raw materials, or either increase in wages of laborers or also higher taxes. Remaining part of this chapter will be covered in video number 3. Thank you.